या सबको सुनाई दे रहा है ऑडियो एंड एवरीथिंग? अगर कोई है यहाँ पे तो फिर थम्स अप कर दो. बट एनीवेज, वेलकम टू ए फॉर आर्सेनल आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस. um, like I said, I was missing in action mostly because settling into a new city, new country, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है. बट नाउ एवरीथिंग इज pretty much settled and I am here and now I'll be regular on this channel again. आदित्य सिंह ने बहुत पहले लिखा था, hey guys, like, share and subscribe and go Gunners of course. तो आज मैं निधि भाई के साथ हूँ and we are going to talk about अक्टूबर इन जनरल, मोस्टली बिकॉज मैंने अक्टूबर मिस कर दिया. um, but it's important for me as a channel and as well for Arsenal and Liverpool, who've had very different fates during October. मैं अभी सारे fixtures and results देख रहा था. From start to finish लग रहा था कि October is going to be a very challenging month for Arsenal. काफी सारे लोग expect कर रहे थे कि Arsenal um, will fall off during October because बहुत tough fixtures का set था October में. Liverpool, Tottenham, and of course Europa League when games will be every 2-3 days. But it's good to see कि Arsenal have come out of this month with the record of 8 wins, 1 draw and 1 loss. And जो loss भी था वो Europa League में था, and that did not affect a position in the Europa League table anyway. So in general, I think Arsenal fans can be very happy. And अभी हम निधि भाई से बात करेंगे. निधि भाई, how important was October before October began? And अब क्या होगा, मतलब अब क्या लग रहा है अक्टूबर के बारे में? यार अगर इफ यू टॉकिंग स्पेसिफिकली लिवरपूल ना, Yeah. तो हमने तो वीडियो बनाया था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ. Hmm. द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड फॉर अस इन अक्टूबर वाज द फैक्ट कि हम लोग ने चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन सिक्योर कर लिया नेक्स्ट राउंड में. Hmm. द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन दैट हैपेंड फॉर लिवरपूल वाज ऑफ कोर्स द लीग रिजल्ट्स. Hmm. But in general, I think the table is starting to make sense, if I may say so. Hmm. ऑफ कोर्स दिस टाइम जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वर्ल्ड कप है बीच में. Hmm. कुछ चीजें बहुत बदलेंगी वर्ल्ड कप के बाद, ये मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ. फॉर बेटर और वर्स फॉर ऑल द टीम्स, Hmm. थिंग्स विल चेंज आफ्टर द वर्ल्ड कप बिकॉज इंजरीज. एक फ्लो होता है ना, और Hmm. फ्लो जब टूटता है ना, नवंबर इज यूजुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ. और फ्लो जब टूटता है तो थिंग्स चेंज. सो आर्सेनल के लिए ऑफ कोर्स बहुत अच्छा था, लाइक यू सेड, वन लॉस व्हिच डिड नॉट रियली मैटर. एक जो ड्रॉ था, ओके, आई मीन दीज थिंग्स विल हैपन फ्रॉम टाइम टू Yeah. टाइम. तो यूनाइटेड हैड अ गुड मंथ. Yeah. Chelsea, like us, did not have a good month. Hmm. City, being City, they had what they had, but all in all, I think, like I said, things are starting to make sense. अगर तू Hmm. देखेगा. हाँ, एक आप जो हमेशा अपने चैनल पे कहते थे, अबाउट हाउ टाइटल्स कैन नॉट बी वन बिफोर द वर्ल्ड कप बट दे कैन डेफिनेटली बी लॉस्ट. एंड काफ़ी सारी टीम्स जिनकी काफ़ी हाई एम्बिशंस थे सीजन को लेके, वेदर Hmm. विद ओल्ड मैनेजर्स हु आर नॉट देयर और विद एग्जिस्टिंग मैनेजर्स, उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा फॉल आउट हो गए. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे लिवरपूल का है, आई हैव बीन सीइंग योर लाइव्स, आई हैव बीन सीइंग योर वीडियोस विद मानस. जब अब धीरे धीरे ग्रेजुअली हाउ टारगेट्स हैव बीन चेंजिंग फ्रॉम टॉप 4 से लेके टॉप 6 से लेके अब चैंपियंस लीग में क्या डेस्परेट सिचुएशन हो गई है. सो क्या लगता है, मतलब अभी लिवरपूल के टारगेट्स आपके हिसाब से कहाँ पे हैं, जस्ट फॉर माय फैंस? यार देख, टारगेट तो इज प्रीटी मच टॉप 4 एज ऑफ टुडे. ठीक हम्म. है, आई नो वी आर 8 पॉइंट्स बिहाइंड एंड ऑल दैट, बट द पॉइंट इज कि अगर इफ यू आर एबल टू कीप इन टचिंग डिस्टेंस तो नहीं बोलूंगा, मगर इफ यू आर एबल टू बी इन द मिक्स हम्म. बिफोर वर्ल्ड कप, फिर वर्ल्ड कप के बाद लुइस डियाज वापस आ जाएगा, जोटा हम्म. वापस आ जाएगा, होपफुली वी विल गो एंड मेक अ मिडफील्डर परचेज एटसेट्रा. वो हम्म. सारी चीजें जब हो जाएंगी तो वी कैन स्टिल गो एंड गिव इट अ गो. हम्म. चैंपियंस लीग तो फ्रैंकली क्वालिफाइड, अब वी हैव टू थिंक अबाउट इट. आज का मैच इज, I've been on multiple channels और वही बात कर रहे थे हम लोग, यार आज का मैच इज मोर अबाउट प्रेस्टीज. You हम्म. cannot, right, you cannot have a thrashing by Napoli at Anfield, especially Yeah. because Leeds से भी आप हारे हो. हम्म. हो. तो I think
टारगेट्स तो गो एज डीप एज पॉसिबल इन द चैंपियंस लीग एंड टॉप 4 टारगेट है मेरे हिसाब से. दीज टू हम्म. टारगेट्स आर देयर. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज अगले 2 लीग गेम्स हमको बता देंगे कि वो टारगेट पॉसिबल भी है या नहीं, क्योंकि हम्म. अगर हमने 6 पॉइंट नहीं लिए तो फिर इट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल. हम्म. हाय सौम्या. सौम्या को हाय, मंजीत राउत, हाय मंजिल मंजू. राउत हाय, निखिल कुमार सिंह हेलो, एवरीवन को हेलो. तो अगर अभी प्रीमियर लीग टेबल की बात करें फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग, you know, if you look at the table, Arsenal 12 games played, 31 points with a goal difference of 19, followed by Man City with 29. If it किसी भी आर्सेनल फैन को, if you at the start of the season कि after 12 games Arsenal will be 15 points ahead of Liverpool, तो बोलेंगे भाई तुम कौन से सस्ते नशे करने लग गए तुम लोग. Because 15 points is a huge gap, and Liverpool का भी gap even to the nearest top 4 team, which is Newcastle. Even though Newcastle have played a game ज़्यादा, it's still 8 points. So top 4 looks very dicey, and as an Arsenal fan, it's a very strange feeling. You're only concerned with maybe one other team during the weekend, and बाकी नीचे जो भी झपड़ी हो रही है, not really concerned about it. Any Arsenal fans in the chat, what have you thought about this season, especially in the month of October? कह रहे थे कि इतना मुश्किल है आर्सेनल के लिए. If we go by the games, 1st October को ही नॉर्थ लंदन डार्बी था. नॉर्थ यार लंदन डार्बी निधि भाई for us was a very important game. थोड़ा हिस्ट्री हमारे साइड पे था because it was at home, but a very emphatic 3-1 beating of Tottenham. जो सारा हो रहा था कि आर्सेनल हैव नॉट प्लेड एनीवन बिग, आर्सेनल ने करा ही क्या है, एंड जो एक बिग टीम थी उस टाइम पर मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल लॉस्ट अगेंस्ट देम. एवरीवन वाज प्लेइंग डाउन all these oppositions like Bournemouth and Leicester and whoever we played at that point of time, Brentford. So this was our very first test, and Arsenal beating their rivals 3-1 at home is a very big result for us. Did you watch the game, Nidhi bhai? The North London Derby. Yeah. Yeah, of course I watched it. Yeah. बहुत डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी यार आर्सेनल की. Mhm. मतलब स्पर्स, मतलब मैं क्या वर्ड यूज करूं, स्पर्स इम्प्लोडेड इन दैट गेम Yeah. कंप्लीटली. वो एंड टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम आर्सेनल, ऑफ कोर्स आई थिंक बहुत ही ज्यादा मतलब आर्सेनल के पास प्लान था और उन लोग ने उस प्लान को एग्जीक्यूट किया बहुत सही तरीके से. सो of course if you look at player performances वो सब पे तो Mm. you made a video and we also spoke about it. Yeah. But बहुत ही अच्छा गेम था यार आर्सेनल का. आई थिंक उस मैच से बहुत कॉन्फिडेंस आया. एक एक Mm. और है, आई डोंट नो हु आर योर ओपोनेंट्स in the Europa League. PSV, Bodo Glimt, PSV, and yeah, PSV, Zurich, Bodo Glimt, and that's it, right? चार ही तो हाँ, होंगे ना. तीन, हाँ, sorry. PSV बोर्ड, हाँ, तो उससे भी थोड़ा फायदा हुआ है Yeah. कि मतलब अगेन टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम दीज टू टीम्स, Mm. उतना हैवी कंपटीशन नहीं था फ्रॉम दीज टू टीम्स. ऑल्दो PSV से आर्सेनल एक मैच Mm. हारा है, but Yeah. still the competition was not that fierce, and because of Yes. that Arsenal were able to focus more on the league. Yeah. And of course मैं पिछले सीजन से बोल रहा हूँ कि भाई Mm. आर्सेनल का प्लान समझ आ रहा था, Mm. तो it's something that is coming to fruition. Yeah. उसी सेम डे पे जिस दिन आर्सेनल बीट टॉटनहम 3-1, लिवरपूल ड्रू 3-3 with Brighton. And if I'm not mistaken, तब was Potter there? I think That he had was just Deserby, but that was Deserby's first game there's with a base Brighton. first game. वो 3-3 में exactly निधि भाई हुआ क्या था? क्योंकि देखा था, I think this was when I think Brighton had took an early 2-goal lead. फिर लिवरपूल ने Yes. कम बैक किया था, and then they eventually they succumbed to a late third goal. Yeah, कैसा? it was very disappointing because देखो हम्म. हम वो मैच अच्छा तो बिल्कुल नहीं खेले, हम्म. but even with all that we it became 3-2. मतलब आपने 3-2 कर दिया, and still which has been our story of our season कि हमने मतलब हम गोल पहले कंसीड करते हैं, उसके बाद कॉन्फिडेंस गिर जाता है, फिर आके कोई गोल मार देता है. अभी तो वी हैव स्टार्टेड लूजिंग दोस गेम्स आल्सो. तो वो गेम में यार ब्राइटन फॉर द मोस्ट पार्ट वर द द मोर एडवेंचरस टीम. दे वर Yeah. द वंस दैट केम टू
I wouldn't say the better team Hmm. because I think we were still okay. Hmm. But I think वो गेम में वही था कि आर्सेनल सॉरी ब्राइटन were more adventurous than us and they got the Hmm. reward in the end and Trossard Yeah. what a guy dude वो मैं बेल्जियम को क्या एंगल दे दिया उसने वर्ल्ड कप Yeah, में exactly. Stacked team. फिर नेक्स्ट गेम ऑफ दैट मंथ मैं चलो यूरोपा लीग एंड चैंपियंस लीग को अभी नहीं कवर कर रहा वाज ऑन 9th of October when Arsenal played Liverpool and हम्म that was my last video मैं आपके चैनल पे भी आया था मेड अ वीडियो ऑन माय चैनल एज वेल you know two consecutive big games सबको लग रहा था कि even when we beat Tottenham there was some whispers कि यार red card changed the game and these guys Arsenal were eventually gifted a win because of Tottenham's stupidity तो लिवरपूल के अगेंस्ट क्या होगा and I remember when I came to your channel I tried something funny but वो fail हुआ and you said ऐसा start नहीं चाहिए हमें and in the game, within the first minute, Martinelli was put through by Odegaard, and wahi same kahani about conceding first. But I एग्जैक्टली think, yeah, conceding first has become a very consistent trend for Liverpool abhi. And हम्म I think I have seen Liverpool defend better जब फबीनी और हेंडरसन सेंटर बैक खेल रहे थे तब उतनी सॉलिडिटी फिर भी दिखती थी कि चलो लिवरपूल कंसीड नहीं करेंगे एलिसन पीछे है आसपास के प्लेयर्स थोड़ा संभाल लेंगे But up when you think you've played with a lot of combinations, sometimes forced, sometimes unforced. हम्म कि वैन डाइक है उसके साथ कभी गोमेज है कभी मैटेप है बट ये कंसीडिंग फर्स्ट वाली हाल हरकतें नहीं जा रही है व्हाट डू यू थिंक या इज द दैट इज द मोस्ट पजलिंग थिंग मुझे वो समझ नहीं आता है कि मतलब क्या क्यों हो रहा है वो और क्या हो रहा है वो इट्स अ लॉट ऑफ जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लीड्स का एग्जांपल दे दो हम्म लेटेस्ट who can you blame except Joe Gomez, या right? मतलब ये how can you cannot coach this. हम्म मतलब ये तो तेरे को देखना ही है ना सी हम्म पर्सनली मैन सिटी के मैच के बाद एंड दैट वाज अनदर गुड रिजल्ट फॉर अस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मैन हम्म सिटी के मैच के बाद ना जो गोमेज के बारे में बहुत ज्यादा हाइप अप कर रहे थे और मुझे हम्म इंटरनेट की ये चीज बहुत अच्छी नहीं लगती है कि प्लेयर्स आर रिटन ऑफ जस्ट लाइक दैट एंड प्लेयर्स आर हाइप्ड अप हम्म जस्ट लाइक हम्म कि मतलब इट्स इधर 0 और 100 वो वाला जो हम्म होता है ना वो मुझे नहीं अच्छा लगता है तो हम्म मैंने शुरू से बोला है कि जो गोमेज एंड आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो दिस जो गोमेज की जो इंजरी है इट इज नॉट इवन अ फुटबॉलर्स इंजरी इट्स अ स्कीयर्स इंजरी because हम्म his heel gets stuck in the mud and his knee gets twisted ओ like that. So समझ he's not the same player post his injury, and हम्म he's not. और उससे हम वो ज्यादा अब पता नहीं for some reason we gave him a new contract also. 2027 तक उसका contract है, हम्म which is a little puzzling for me. Honestly, some contracts that we have given out are, but again, not getting in too much into that. हम्म रियलिटी ये है कि यार वैन डाइक का फॉर्म खराब है बट वैन डाइक का फॉर्म खराब होने के साथ साथ आसपास में फैक्टर्स भी हैं ट्रेंट हैज बीन हम्म इन पुअर फॉर्म एंड ट्रेंट हैज बीन इन पुअर फॉर्म बिकॉज व्हाट हैपेंड टू हेंडरसन हु इज आल्सो बीन इन पुअर फॉर्म हम्म उसकी वजह से फेबिनियो स्पेसेस कवर नहीं कर पाता है बिकॉज फेबिनियो इज लेफ्ट अलोन सो ही इज हम्म डूइंग ही हिमसेल्फ इज प्लेइंग वेरी बैडली हम्म थियागो अगेन inconsistent. Robertson not started well, got injured, back now playing well. So it's been a very bad cocktail of injuries and हम्म really bad form for Liverpool. This time I just take a comment. So Rasool Goyatha says, concern for me is Gabriel Jesus is not scoring goals. He's providing good things in attack, but we signed him as striker, and I think he's trying too hard to score, but not finishing clear chances. I think you're right ये कि हम ये yeah. ये सुना सुना लगता है. um, देखो हाँ you're right about the fact कि गैब्रियल जेसूस को हमने एज अ स्ट्राइकर लिया था because in the last couple of seasons actually our problem was either we were reliant on one man only जहाँ से goals आ रहे थे that was Aubameyang and when he was not working then nothing was working or a striker who was not as mobile as Lacazette मतलब वो सिर्फ front and back थोड़ा सा ही shuttle करता था and used to hold up plays to make something happen. गैब्रियल जेसूस की अच्छी बात ये है कि
He's mobile, he can play across the front line, and he combines very beautifully with other players. And I think Arteta के system में, I don't know if it's by design or if it's just happening, but the goals are very evenly distributed among everybody. And it's not only our front three now. Saka scores, Martinelli scores, Jesus when he was on form scored, Odegaard scores, Partey scores, Xhaka scores. So it our goals जितने भी हमने करे हैं इस season, total मैं बता देता हूँ जल्दी से. Our goals have been, we scored 30 goals this season and it's been distributed among 5 players. So load management of goals is good थी. अभी मान लो if some player is off form like Gabriel Jesus, उतना affect नहीं करेगा हमें. But yeah, you're right. Nottingham Forest के अगेंस्ट हमने देखा था, he was trying to get on the score sheet and as a lot of commentators also said अगर हमें कहीं penalty मिलती, I'm pretty sure Gabriel Jesus would have taken it. तो हाँ, some players are purple patch players, कभी स्टर्लिंग जैसे होता है, गैब्रियल जेसस होता है, they need to score very regularly, and जितना regularly वो score करते हैं उतना better है. But for now, he's providing good things, he's providing assists, he's providing movement. कभी कभी he drops all the way back to the half circle या mid में जो circle होता है उधर तक. Sometimes he's way behind the line. So I think for now उतनी कोई concern की बात नहीं है, but I don't think the management is also that concerned. We'll take another question from Fireworks Hunter. Nidhi bhai, why Chelsea link with this Russian midfielder Arsene Zakarian? Is he really good? मैंने तो नहीं सुना इसके बारे में. यार रिपोर्ट्स आ रही हैं इसके बारे में. ऑब्वियसली आर्सन जकारियन को मैंने खेलते हुए तो नहीं देखा है, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन उसके बारे में रिपोर्ट्स बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं कि पेसी प्लेयर है और ही इज समवन दैट कैन प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ डायमेंशन टू चेल्सी, जहां पे वो हेल्प कर सकता है उनको. मगर यार अभी क्या है ना कि ही इज, आई थिंक ही इज 18 or something like that. I'm not sure. Okay. Way too young for you to build a lot of expectation out of those players. Similarly, अभी एक और player था who I'm forgetting his name. He was linked with with Real Madrid and Barcelona both. Hendrick. Hendrick. Again, 16-year-old player, ज्यादा खेला नहीं है, तो ऐसे good or not at his age he's pretty good. But मतलब good enough to do that, उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा. That's true. अनिकेत कहते हैं निधि भैया आप लोगों का टीम में सब एम्बुलेंस जैसा प्लेयर है, इंजर्ड रहते हैं सब. हाँ भाई, वो हम लोग फुल. Jesus is a mix of Laka, Giroud and Oba. हाँ, to an extent I would say, but Jesus का benefit ये है कि he is also surrounded by better players, younger players and more dynamic players जो और attacking सोचते हैं. Last time ऐसे player Giroud के साथ ही थे when Santi Cazorla was there, Prime Ozil was there, Alexis was there. So yeah, maybe more of he's lucky like Giroud, but I think he's a better finisher than Giroud and what was for Arsenal. Do you think Nelson will be consistent like Saka? Bhai, Nelson ne, as good that performance was, he's played for the first time since the start of last season. And चलो 2 गोल मार दिए, but if you've seen the game, you'd see कि Nottingham Forest ने Arsenal के against कुछ करा नहीं exactly. Thomas Partey had 119 touches in the game. and he made 13 final balls in the attacking third. 13. तो आप सोच सकते हो कि नॉटिंघम फॉरेस्ट ने कुछ करा नहीं. हाँ, बहुत ज्यादा फ्रीडम थी, बहुत ज्यादा, मतलब उन्होंने कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट दिखा दी थी आर्सेनल को. नाउ दैट आई calm down after the celebration and all. Reece, I don't know, मतलब if Saka is injured or he needs a rest, Reece might be one of our best options because he's the OG Saka. If everyone follows Arsenal, सबको पता है सबसे best hill end product was considered Reece Nelson, much better than Saka, but चलो development hamper हो गया, जो भी हो गया. But against better teams, against Chelsea, I don't know if he'll have the same freedom, especially if he's facing players like Koulibaly, Thiago Silva, etc. So देखने की बात है कि क्या चलेगा उधर. But consistency minutes के साथ आएगी, and he'll have his first opportunity tomorrow against FC Zurich in the Europa League. If he plays well, maybe he'll get a chance against Chelsea. Arsenal linked with Orlando City winger Facundo Torres. Yes. चार्ल्स वॉट्स ने कहा सिर्फ अभी तक स्काउट्स के पास ही बात पहुंची, ज्यादा कुछ है नहीं. हमने प्री सीजन में खेला था, वहीं पे आई थिंक उसको देख लिया होगा. Who do you think will win the Serie A this season? I don't watch the Serie A that much, but I'm very happy.
I hope there is one. If there is one team I have a soft spot for, um, that's Roma. Hmm. ठीक है. So I would love Roma for Roma to win the Scudetto, but Hmm. लग नहीं रहा. But if not Roma, then I hope Napoli win it because Yeah. बहुत exciting team है. Yeah. But Napoli और Spalletti का problem यही रहा है कि Spalletti more specifically यार वो बहुत फास्ट स्टार्ट बहुत ही जबरदस्त स्टार्ट करता है बहुत बार. Hmm. But he is sometimes not able to follow Yeah. throughout the season. Hmm. Spalletti ka, but this season hopefully he does that because Yeah. honestly it will be great if Napoli Hmm. win the Italian league. Yeah. अच्छा लगेगा. But honestly, I think Milan are now coming in their own. Hmm. So experience पे भी अगर देखा जाए तो I think Milan Hmm. will edge it in the end. Yeah. लास्ट कमेंट ले लेते हैं। हमारे खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड में लॉस ज़्यादा मोरल डाउन कर दिया और डेप्थ कम है लिवरपूल में। हाँ, आई एम गेसिंग इज टॉकिंग अबाउट लिवरपूल कि जब लिवरपूल लॉस्ट एट ओल्ड ट्रैफर्ड, डू यू थिंक अ डिफीट अगेंस्ट द राइवल्स, स्पेशली एक टीम जो उस टाइम वाज फाइंडिंग इट्स फीट, ये कार्ड्स पे था या फिर डिड इट अफेक्ट I द टीम? I don't think it is down to one defeat or one result or वो issue है. There हम्म। are, like I said, multiple problems right from recruitment to Klopp making mistakes to player ka forms हम्म। to just pure blind luck. So for example, if you remember the Everton game, या। right? Um, that last moment blind save by हम्म। the Everton keeper, हम्म। या। right? And it's just one of those things. तो वो होता तो हमारे पास 2 पॉइंट और होते. और हम्म। again, हम्म। see, it all like referee decisions, but या। mostly recruitment and our players playing या। very badly. These are the two reasons. तो निधि भाई, विल टेक द कमेंट्स अ लिटिल बिट, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो Hmm. आफ्टर आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल, बाय द वे वो हमने गेम की बात कंप्लीट नहीं करी थी, जब आर्सेनल का फास्ट स्टार्ट था उसके बाद लिवरपूल क्लॉड देयर वे बैक टू द गेम फिर भी, एंड आई डोंट It was रिमेम्बर। it या। was a very strange game, yeah. It was a very strange game. We did या। not deserve to win the game. That is number one. Arsenal या। definitely deserved to win the game. And yet that game was decided by a refereeing decision. दैट इज ट्रू यार, मैं उसी पे आने वाला था। So it's but again see जैसे मैं uh, I would have talked about this game a little differently had we played a little better. हम्म। But I'm not saying that the referees won the Arsenal the game. Referees won हम्म। Arsenal the game because they were the better team. मेरा जो Clearly. मेरा जो व्यू था उस गेम का, इट वाज कि हमने स्टार्ट बहुत अच्छे से करा था, एंड देन I don't know, after maybe 10 minutes, Liverpool clawed back, then Darwin scored. And then it looked like, yeah, 1-1, but somehow you reached halftime with 1-1. Hmm. And out of nowhere, Liverpool conceded the Uh-huh. second goal. I think वहाँ पे dynamic काफी change हो गया था. Even though उसके बाद Bobby scored. And of course, वो Gabriel का एक handball था, which I think the referee missed. Even हाँ. though very unnatural position था, and the penalty which I think Liverpool conceded, वो थोड़ा सा चलो dodgy है, जो भी है, जो कहना है आपको. But I think in that moment I was very euphoric. But looking back at the season now, लगता है कि that game should have been the first warning sign कि आर्सेनल की थोड़ा कहीं fatigue या कुछ कुछ कमियां दिख रही हैं. Because if you look at our next games, बोडो ग्लिम्ट के अगेंस्ट 1-0, चलो ठीक है, इट्स अ डिफिकल्ट प्लेस टू गो टू, आर्टिफिशियल टर्फ पे, नॉर्थ पोल पे खेल रहे हो आप, नॉर्थ पोल के पास Hmm. आर्कटिक सर्कल में। लीड्स यूनाइटेड जो लिवरपूल के साथ हुआ, आर्सेनल के साथ बहुत नियरली हो गया था, where we, Exactly. yeah, we were holding on for 1-0, वो बैमफर्ड का कुछ इशू था, कोई पेनल्टी was taken away from them. तो बहुत सारे इश्यूज थे कि लग रहा था कि आर्सेनल के काफी सारे क्रैक्स हो सकते हैं, एंड आई थिंक दैट केम टू अ हेड व्हेन आर्सेनल, चलो 1-0 अगेंस्ट पीएसवी भी जीती, व्हेन पीपल आर लाइक वी नीड टू बक अप अगेन, एंड इट वाज ओनली अगेंस्ट साउथहैम्पटन ऑन 23rd of October जब फाइनली थोड़े से पत्ते गिर गए हमारे, when 1-1 हमने ड्रॉ किया, सेम सिचुएशन वेयर वी टुक द लीड, बट हम बहुत स्लगिश हो गए. सो जैसे एक लिवरपूल की कंसिस्टेंट थीम है कि जब वो टेक दे
have a very slow start, then they even claw back, and then they're always in the danger of losing or dropping points. आर्सेनल का यही है कि we start fast and we just end up losing our momentum. So for me, before I let Nidhi bhai take over, for me it's either down to कि हम इतनी इंटेंसिटी पे खेल रहे कि हमारे प्लेयर्स यूज टू है नहीं अभी, प्लस इट्स अ वेरी यंग टीम के फायदे ये होते हैं कि एक एनर्जेटिक टीम है, बट इट्स ऑल्सो वेरी इनएक्सपीरियंस टीम, दे डोंट नो व्हेन टू स्लो डाउन एंड हाउ टू मैनेज द गेम समटाइम्स. तो हाँ, ये चीज़ें मे बी विद टाइम बेटर होंगी, बट काफ़ी सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा. निधि भाई, लाइक आई सेड विद यू ऑल्सो, अगर हम लिवरपूल की गेम्स की बात करें जल्दी से, आफ्टर आर्सेनल्स गेम यू प्लेड रेंजर्स व्हिच वाज अ 7-1 विक्ट्री. तो लग रहा था कि भाई चलो मे बी थिंग्स विल टर्न अराउंड फॉर देन, एंड देन यू बीट मैन सिटी 1-0 एज वेल. तो लग Yeah. रहा, तो उसके बाद एक लग रहा था कि चलो लिवरपूल कैन कम बैक, वेस्ट हैम को भी 1-0 बीट किया. बट द थिंग विद ऑल दीज रिजल्ट्स इज, इसमें से कोई इतना मेमोरेबल लिवरपूल विक्ट्री नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द मे बी 7-1 बिकॉज ऑफ द स्कोर लाइन. चलो मैन सिटी वाला वाज अ काफी डिसेंट गेम विद साला स्कोर, बट उसके बाद भी 1-0 अगेंस्ट वेस्ट हैम, 1-0, देन अ लॉस अगेंस्ट फॉरेस्ट, देन अ 3-0 अगेंस्ट आयाक्स. ये Hmm. काफी सारे फॉल्स स्टार्ट्स, फॉल्स डाउन्स हो रहे हैं. तो Yeah, it's हाँ. like a classic. It's like a classic Jekyll and Hyde. हम्म. चैंपियंस लीग में मतलब 5 में से 4 जीत गए चैंपियंस लीग में और 12 में से 4 जीते हैं प्रीमियर लीग में. या. तो एंड इफ यू लुक एट आवर चैंपियंस लीग परफॉर्मेंस बार, पहला मैच तो बहुत ही बुरा खेले थे नापोली के साथ, बट इफ यू लुक एट आयैक्स एट होम वी प्लेड वेल. हम्म. ठीक है, नापोली के साथ दोनों मैचेस वी प्लेड वेल. आयैक्स के साथ अवे पहले का 30 मिनट्स वी वर नॉट गुड, बट हम्म. उसके बाद वी प्लेड वेल. या. परफॉर्मेंसेस भी अच्छे रहे हैं. हम्म. तो इट्स अ एक्सट्रीम डिकोटमी फॉर्म हम्म. दोनों साइड्स. हाँ. But I'll tell you something. Coming back on, I want to say one thing about Arsenal का form और हम्म. Arsenal का situation. देख, Arsenal का real test will come in January, इन जनवरी. because in January because Man City usually जैसे पिछले सीजन देखेगा उसके पहले भी सीजन देखेगा तो दे start a little slow. हम्म. इस बार तो स्लो स्टार्ट नहीं किया है, हम्म. बट वहां से दे गो ऑन अ रैम्पेजिंग रन. मतलब या. ऐसा 15-16 गेम जीतते हैं वो लोग और हम्म. दे हैव बीन डूइंग दैट फॉर क्वाइट सम टाइम. या. सी अगेन, आई डोंट विश फॉर इंजरीज टू हैपन, हम्म. बट वर्ल्ड कप है, सो इंजरीज विल हैपन. या. ठीक है, एंड वी नो दिस ऑल टू वेल. हमने तो उस इंटेंसिटी के साथ कीप अप भी किया है 2 बार हम्म. और या. तो भी हम एक पॉइंट से लीग हार गए हैं. एंड दिस वाज अ टीम दैट यर्गन क्लॉप वाज सेटिंग अप फॉर लाइक 2-3 years और टीम साथ हम्म. में खेल के अच्छा खेल रही या. थी. या. If Arsenal are able to do that, no, and of course this is हम्म. assuming City still do it, या. which I think they are capable of doing. या. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. That's the real test of Arsenal हम्म. टाइटल क्रेडेंशियल्स की या. बात अगर की जाए तो. क्योंकि क्योंकि सिटी भाई देख क्या है ना कि अभी हालैंड इज नॉट गोइंग टू द वर्ल्ड कप, सो he'll get his rest, हम्म. right? या. सिटी के डेप्थ के बारे में हम क्या ही बात करें. दे हैव लाइक डेप्थ ऑल ओवर द प्लेस. या. या. 100%. So that is going to be, that has been our assessment, हम्म. our situation when we go toe to toe with City, हम्म. and that is going to be the case with Arsenal या. as well. आर्सेनल के अगेंस्ट, लाइक आई सेड, एक यंग टीम के पॉजिटिव ये होते हैं कि यू कैन हैव अ लॉट ऑफ एक्सप्लोसिव एनर्जी, प्लेयर्स यूजुअली ज़्यादा फिटनेस में भी हाई होते हैं, थोड़े ज़्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं, बट अगेन एक्सपीरियंस मैटर्स. एंड समटाइम्स जैसे इफ यू सी द लास्ट गेम जब साका को इंजरी हो गई, इट ओनली टेक्स 1 or 2 इंजरीज कि आपका पूरा गेम प्लान चेंज हो जाता. चलो इट वाज लकी, इट वाज अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट की रीस हैड टू कम ऑन एंड थोड़ा हो गया. Otherwise, if you see Fabio Vieira, Arsenal fans, Fabio Vieira ने स्टार्ट अच्छा करा, बट देन अभी दिख रहा है कि फिजिकलिटी ऑफ द प्रीमियर लीग माइट बी लिटिल टू मच फॉर हिम. तो देखते हैं, जैसे निधि भाई ने कहा, जनवरी ऑनवर्ड्स क्या होता है. आर्सेनल के कुछ की प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, साका तो मोस्ट डेफिनेटली इन्वॉल्व है. ब्राजील में थोड़ी फाइट पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन इफ गैब्रियल जेसूस, गैब्रियल एंड दिस मार्टिनेली गो. फ्रांस में विद वरान की इंजरी लगता है सलीबा शुड बी अ शो इन फॉर श्योर, एंड आई एक्सपेक्ट फ्रांस टू गो डीप, तो सलीबा विल आल्सो बी ह्यूज प्लेयर. अभी आई थिंक रीस जेम्स को इंजरी होगी, तो मे बी बेन वाइट माइट बी इन कंटेंशन नाउ, हु नोज.
Tomiyasu is going with Japan, Xhaka is going with Switzerland, Partey is going with Ghana. तो हमारे काफ़ी सारे की प्लेयर्स आर गोइंग नाउ, सम ऑफ देम माइट नॉट गो उतना डीप इनटू द वर्ल्ड कप, बट यार ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं. एंड वंस अगेन जस्ट लाइक लास्ट सीजन में हमारे स्टेक्स थे टॉप 4. जनवरी विल बी क्रूशल फॉर, निधि भाई सेड, फॉर सिटीज रन, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ री. लास्ट ईयर हमने फंबल कर दिया टॉप 4 बिकॉज इंजरी इतनी ज़्यादा अमाउंट हो गई. टू एट द एंड वी फेल ऑफ. And even though if we fall off this time, chalo, we might not fall out of the top 4. But staying in that top 1, top 2 position for this team will be very crucial after last year's disappointment. And I hope, जैसे अभी एडू का नया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, we're looking at new players and for defensive midfielders. Smith Rowe might be coming back maybe in January. Facundo Torres जैसे किसी comment ने कहा था. So January will be very important for us, as of course will be for Liverpool fans. Nidhi bhai will take one this question, उसका comments लेते हैं कि January, do you think अब साइरेंस बज गए होंगे एफएसजी के फुल रिक्रूटमेंट टीम के लिए? Hopefully. अरे या होपफुली यार. लुक, I'll be the first one to admit कि मुझे भी नहीं लगा था कि it is going to be so bad. Because if you talk about specific players, Fabinho, honestly, if anybody says कि they saw Fabinho's bad form coming and this bad of a form, I don't believe it. राइट. हेंडरसन तो मैंने शुरू में ही बोला कि यार उसको फेज आउट अब करना चाहिए, ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ. Navigator gave me hope कि भाई Navigator last season relatively fit रहा था, तो he gave me a little bit of a hope, although it's a fool's hope, but still, right. Thiago is playing well, तो उसमें कोई इशू नहीं है. हेंडरसन बुरा खेल रहा है, बट इतना बुरा खेलेगा मुझे पता नहीं था. राइट. सी द पॉइंट इज दिस, FSG does not understand football, ये मेरे को पता है, but hopefully they understand money. Right. And not finishing in the top 4 is going to be detrimental for them in terms of revenues. Yes, of course. Right. And that's a vicious cycle because हमारे owners खुद का पैसा नहीं डालते हैं क्लब में. And once you fall out of the top 4, like Chelsea 250 million ये season spent किया, and we are still talking about a team that is still not nailed on for top 4. Chelsea are going to spend. Newcastle are going to be rampant in I the think transfer. if they get top 4 this season, they will spend beyond Chelsea levels to stay there. वो एक बार taste आ जाता है, वो यार वो मैन सिटी के फैंस कंप्लेन करने लगेंगे कि दिस इज अनफेयर. ठीक है, वो लेवल पे वो स्पेंड कर सकते हैं. And the thing is, they've been doing it smartly with the help of Dan Ashworth from Brighton and all that. See, the thing is, so my point is that if you fall out of the top 4, it's a long way back. You guys know that, right? Even with spending money and everything, it is not so simple. So and the thing is कि हमको ना बहुत ज्यादा ऐसे मेजर ओवरहॉल की जरूरत नहीं थी अगर हमने टाइम पे थोड़े स्पेंड समर में भी अगर हम 1-2 मिडफील्डर ले आए. But because of what has happened now in these 3-4 months, we now need 3 profiles. If I talk specifics, we need number 1 a ball winner, क्योंकि जीनी वाइनल्डम के जाने के बाद से we have not had a player who can bring the ball from deep and link attack and defense. We now that we have bought Nunes, we need a guy जो बीच से जो मतलब एक chance creator, playmaker, whatever you want to call it, वैसा एक player चाहिए, क्योंकि Nunes को लेफ्ट में खिला के मतलब नहीं है यार. His strength is through the middle. And he will settle in or whatever, वो तो discussion. And we also need someone who can give Fabinho a little bit of competition. तो 3 profiles हमको चाहिए. 3 midfielder तो PSG नहीं खरीद के देने वाला है क्लब को. I'm hoping at least the ball winner and the playmaker, these kind of profiles we go after in January, and hopefully we are able to sign somebody. एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे. आई वांटेड योर ओपिनियन ऑन दिस. क्लॉप के साथ हमने देखा था, वो मैंने आर्टिकल भी पढ़ा था, वो 7 ईयर साइकिल जो कहते हैं क्लॉप की, जो भी होती है. इन क्लॉप को हटा के, do you think after every 5-6 years, rather than changing the team for new ideas, should teams just change their managers for freshness? यार
I think, look, if you, I think a lot of it is कि मतलब वो hindsight में बोलते हैं ना. Hmm. Nobody was having this conversation after the kind, Yeah. and by the way, that was Klopp's seventh season. Yeah. This is his eighth season at Hmm. Liverpool. So the point is, maybe, Hmm. for a certain type of club, maybe Yeah. एक time के बाद change जरूरी भी होता है. Hmm. Uh, and that's fine. Every club has a certain priority and a Yeah. certain style of working. Look, honestly, we are in a mess right now, and right now, sacking Klopp would be the worst thing, absolute Hmm. worst thing. Yeah. मैं एक पॉइंट पे समझ सकता हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं, एक तो देख, इंटरनेट ट्रोलिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, Hmm. दैट Hmm. इज Hmm. Hmm. समथिंग आई डोंट इवन पे अटेंशन टू, Yeah. बट I have seen some Liverpool fans say this, and with all due respect, it sounds like it's coming from a place of frustration या emotional outburst बोलते हैं ना, कि Hmm. हमको बुरा लग रहा है तो किसी को सजा Yeah. मिलनी चाहिए. Yeah. वो फीलिंग at least I get. Hmm. Right now, the worst thing we can do is sack Klopp. Yeah. We need to, back him in the transfer Hmm. market. 2018 से Liverpool have signed one center Hmm. midfielder, one, and we've also sold one, Yeah. or let one go, Hmm. not sold, but let one go. That is not okay. Yeah. I mean, you've seen what Klopp has achieved from players like Joe Allen and God knows. A time I remember Klopp was managing Alberto Moreno, Balotelli at one point. He was one Jordan Ibe, Fabio Borini. These were the Fabio मतलब, Barini, yes. exactly. You Yeah. look at that team, what Klopp got. Yeah. And what Balotelli भी एक point पे was a Klopp के under he एक टाइम played. पे. Yeah. हाँ, although Klopp got rid first chance he got. Fair enough. यार मेरे को एक ही चीज अमेरिकन स्पोर्ट्स के बारे में अच्छी लगती है दैट ड्राफ्ट सिस्टम इट ऑलवेज हैज सम अमाउंट ऑफ फ्रेशनेस कि आपकी टीम Correct. कभी स्टेल होती नहीं है यू विल ऑलवेज हैव यंग ब्लड विद यू खैर लेट्स टेक सम कमेंट्स अगेन साका इंजरी अपडेट मैंने जो कल पढ़ा था आर्टिकल उसमें बस यही था कि आर्सेनल आर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक आई थिंक अ लॉट डिपेंड्स ऑन हाउ रीस प्लेज अगर रीस अच्छा खेलता है आज कल यूरोपा लीग में थर्सडे को सॉरी then he might get a chance, or maybe Marquinhos or Fabio Vieira will get a chance. It won't surprise me if Gabriel Jesus plays right wing and Nketiah goes down the middle. But अगर बहुत ही खराब खेलते हैं हम Zurich against right wings especially, Arteta has known to rush players earlier, but I don't think with Saka he will do. Although if you read Arteta ke comments, a world class player should play every 3 days, whatever. Chalo, that's debatable. In every season, Napoli start good, but not ending is not good. Huh? That is what Nidivai was saying. Ki even the coach Spalletti, sometimes he's too fast. वही होता है ना premature celebration sort of. फिर व्यू ऑन जाका's फॉर्म भाई क्या रिडेम्पशन आंख है बंदे का फ्रॉम पीपल सेइंग जाका ले लो बेच दो फ्री में जाने दो ही वाज सपोज्ड टू गो टू रोमा प्ले फॉर मोरिनियो या वही था यार मतलब Xhaka loyalists will say, me being one of them, that every manager, no matter what fans see on the pitch, every manager wants him on their team. First name on the team sheet, captain material. ठीक है उसकी कुछ कुछ कमेंट्स बहुत लोग मजाक उड़ा लेते हैं आई ऑलवेज गेट द कीज टू द हाउस एंड एवरीथिंग एंड व्हाटएवर बट व्हाट अ रिडेम्पशन एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ इट हैज टू डू विद पार्टे यू नो जाका इंडिविजुअली अच्छा नहीं खेल रहा ही इज प्लेइंग वेल एज अ पैकेज फॉर्म कि पार्टे ने उसको इतना रिलीव कर दिया है उसकी डिफेंसिव ड्यूटी से इफ यू सी दैट गोल जो रीस का पहला गोल था Xhaka just drifted from our half of the pitch, our third of the pitch, to the opponent's third, and nobody tracked him. It's not because low की marking खराब थी, but he's making these runs, and Gabriel Jesus is taking players away. He's going आगे. Martinelli on the wing is doing something. So he's playing at Switzerland level. Shaka for Switzerland has always been good, and everyone was always like, "Why can't he play like this for Arsenal?" Because he's running the channels now. But I still think इस सीजन के एंड तक आर्टेटा विल स्टार्ट फेजिंग हिम आउट बिकॉज ऑनेस्टली एमिल स्मिथ रो प्लेस दो चैनल्स मच बेटर देन शाका अब एमिल की सिर्फ एक ही इशू है कि इंजरीज बहुत है एंड as good as Xhaka is, he's what I think 30 now, 29 or 30. He still has a Yeah. few years in him, but this season, yeah, he's been immense. I think
one of the contenders for player of the season, and of course usko player of the month bhi mila after so many years at Arsenal, so that says a lot um, for Shaka's form. The problem with that game was Arsenal, the moment they scored, they tried to slow the game down. And I think it's not only the Liverpool game, आप ये सब बहुत सारी games के बारे में कह सकते हो. Maybe it's just, maintaining concentration. क्योंकि मैंने जब देखे फर्स्ट गोल के बाद you're right कि हम गेम को स्लो कर देते हैं. But second goal जाते ही something unlocks in our team. We play with much more freedom and much less fear. Nidhi bhaiya, this season every goalkeeper against Liverpool, Buffon, Neuer बना पड़ा है. For example, Henderson and Melier. हाँ, is ये there तो an element of luck to whatever's happening to Liverpool कि मतलब prime Neuer type सारे हैं सारे आपके keepers. अरे यार मतलब ऑब्वियसली ना मतलब अगेन जैसे आर्सेनल लास्ट सीजन टॉप 4 फिनिश नहीं किया, हम्म क्या उसमें लक इन्वॉल्व नहीं था? था ना, हम्म थोड़ा सा तो लक इन्वॉल्व था कुछ गेम्स में, है ना? हम्म तो it is, see, the primary reason is us, the primary reason is yeah. us being very poor. हम्म But yeah, थोड़ा लक तो इन्वॉल्व है. लीड्स वाले गेम में he made 9 saves, man. Like that's the highest, right? That's the highest anyone has ever made. मतलब वो क्या खेल रहा था, एंड क्रेडिट टू हिम यार. oh yeah. मतलब क्रेडिट टू हिम अगेन. लकी और नॉट, unlucky or not, that guy was, हम्म matlab, see, the reality is that day Leeds wanted it more than us, and that's shameful. As आप एनफील्ड पे खेल रहे हो, they हाँ, overran us by 11 11 kilometers. kilometers. हाँ, I saw your video. हाँ, 11 That cannot kilometers. happen. Of course, That of cannot course. happen, right? तो luck तो है ही, but हम्म the it's not why we are in this position. The reason is us being poor. yeah. Daksh Bhaiya, what's your take on the left back debate whether Tommy should continue playing there or Tierney should play there? Because Tommy doesn't give us much offensively, but he's defensively solid. यार इसका पहले तो Arteta was saying it's tactical, तो चलो you were like ठीक है, Salah is left-footed and Tommy is ambipedal, तो it's good against someone like Salah who sometimes cuts in, sometimes goes wide or whatever. But now it looks like it's not tactical. लग रहा है कि टॉमी आसू में ऐसी कुछ qualities हैं जो which are very essential. And if you see, हमारा first fullback inversion starts from the left back only. हमारा right I'll back, हाँ, I'll give. I'm sorry to interrupt. I'll no give you problem. one example. Arsenal का जो पहला गोल था against Forest, Yeah. right? If you look at that goal back, Hmm. अगर आप आज भी अभी भी जाके आप replay करके देखोगे, Hmm. if Tommy Asu does not make that interception and he does not provide the ball, that goal does not Yeah. happen. Yeah. Yeah. 100%. हाँ. तो ऐसा नहीं है कि offensively वो contribute नहीं करता है. Hmm. See, नहीं, there हाँ. are a lot of players ना जो easy on the eye. For example, अगर आप आर्सेनल में हो तो ओडेगार्ड ना easy on the eye because he will play that ball और उसके बाद गोल होता है. बट आप अगर पूरा प्ले देखो ना, ऑब्वियसली Hmm. ये सच बात है कि टियर्नी मतलब ऑफेंसिवली ज्यादा प्रोवाइड करता है, बट Hmm. ऐसा नहीं है कि टोमियासु हैज नॉट प्रोवाइडेड यू Hmm. ऑफेंसिव इनपुट्स. Yeah. I think सॉरी. Tommy, no problem, no problem. सही कह रहे हैं निधि भाई कि if that interception does not happen, वो भी opponent के half में इतना आगे चल के, that goal does not happen. And उसके बाद I think after Tommy won the ball, फिर ball was played across to Shaka cross field, मतलब ground pass था. So yeah, I mean, Tommy is a very important part of our build-up. एक और चीज ये है कि यार, if you see Tommy's game for Japan, he's played for Japan, left back, center back mostly, right back, holding midfielder also. So Tommy is comfortable in various areas of the pitch. कुछ players होते हैं, they're comfortable on a particular side of the pitch या कुछ particular जगहों पे. अगर आप एक winger who's used to running fast into space, आप उसको अगर midfield एक cramped midfield में डाल दोगे तो sometimes it doesn't work out. He's not used to it. He's not used to the vision. He's not used to finding players and making the play tick and everything. Tommy की versatility is a huge thing. But that doesn't mean कि I think Kieran is out of contention. इंटरेस्टिंग होगा कि जिंचेंको वापस आते तो फिर क्या होगा बिकॉज if Zinchenko comes back and he's straight into the left back position, that means technically KT is the third option. Because अगर fit भी है KT, even then Tomiyasu plays and then Ben White's at right back. But यार I think ये ना एक individual event नहीं है. Nobody expected Ben White to be this good at right back also, by the way. Everyone thought कि Ben White will be a backup centre back. But he's playing amazing at right back as well.
तो उसने टॉमी को डिस्प्लेस कर दिया, टॉमी ने केटी को डिस्प्लेस कर दिया, केटी वाज सपोज टू प्ले फॉर जिनचेंको, जिनचेंको इंजर्ड है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ खबर खबर, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव ऑप्शन। आई थिंक इफ यू आर अ टीम व्हिच हैज एम्बिशंस फॉर द टाइटल, ऐसे हेडेक्स होने चाहिए कि किसको खिलाएं किसको नहीं खिलाएं, एक अच्छा प्लेयर बेंच पे बैठ जाएगा, होने ही चाहिए ऑप्शंस, क्योंकि टॉमी का काफ इंजरी, काफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंजर्ड प्लेसेस फॉर अ फुटबॉलर, एंड बहुत लंबी इंजरीज हो जाती है अगर आप रिपीट कर लें। टॉमी तो बहुत रिपीट करता है, एक उसकी एक इंजरी होती है एक काफ में, फिर दूसरी इंजरी हो जाती है। सो वी शुड हैव दिस हेडेक। Nidhi bhai, your opinion on the season summer window free transfer market for the likes of Eriksen, Onana from Ajax, Mazraoui, Kessie, Rudiger, Christensen, Dybala and many others. देख यार, Uh, हाँ, नाम तो मुझे नहीं पता यार, मतलब आई डोंट नो द प्ले द रूडिगर, इज दिस द I think he's talking about कि जो इस सीजन की जो समर विंडो में थे फ्री ट्रांसफर्स थे। I'm Aniket, ओके 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 put a not, you यार, can also add another comment, but I think he's talking about कि इस season I think free window में maybe Liverpool could have gone for some of them, or maybe next window do you think Liverpool will look at the free transfers? Is that more viable for a non-spending team? यार आई वी कैनॉट अफोर्ड दैट, Mm, too big of a risk. We mm, have to go for proven players who will come and start contributing straight away. okay. हमको see, as good as Harvey Elliott is, as good as Fabio Carvalho is, the problem Mm, is they, एक तो ये 18-19 साल के हैं, तो मेंटल मैच्योरिटी तो नहीं है, फिजिकली ऑल्सो दे आर लाइक 2-3 years behind being physically mm, that much, because बहुत सारे yeah. गेम्स में यू विल सी Harvey Elliott being bullied off the ball, एंड वो होगा Mm, ही, right? That mm, is going to happen. So I don't see, of course, as a backup option maybe, but I don't think this is a strategy mm, we can afford to take honestly in the mm. transfer, मतलब अभी transfer में. Joshua Diaz says October has been a brilliant month for us, especially Miguel Almiron. And हम बात ही कर रहे थे कि Newcastle have been steaming काफी आगे। एडी हाउ जो कहते थे कि इज ओवर परफॉर्मिंग, मे बी ही हैज अ रियली गुड स्क्वाड जहाँ पे वेरियस पीपल आर वर्किंग एंड प्लेइंग सो वेल। So good on you, One Joshua. brilliant thing, one brilliant thing that Newcastle have done, no, is this: they Mm, have kept coaching and recruitment separate. Of yeah. course, Eddie Howe has an Mm, input, but I think Dan Ashworth is the guy taking care of recruitment, which has been a very mm. good decision. Okay. After Chelsea's game, Sack gang would like sack Potter and bring back Tuchel. अरे यार ये तो चलते ही रहते हैं, ये ट्विटर को ना तुम इतना सीरियसली मत लिया करो। Me after seeing Daksh bhai be like Jehan दारू वाला भाई अरे यार कौन तुम F1 को ला रहे हो इसमें है? इसका शॉर्ट बना के डालना. Liverpool need a midfielder for time being that can settle a squad for a bit. इसके बारे में we'll come after the comments कि यार लिवरपूल को किस मोल्ड का मिडफील्डर चाहिए? Do they just go back for विनाल्डम या फिर विनाल्डम टाइप का प्लेयर चाहिए? We'll ask निधि भाई after this. Liverpool desperately need a break. Hope so this World Cup break can turn the table around. हाँ निधि भाई said in the beginning कि a World Cup is going to be very important for Liverpool, as for the other teams, because other teams can get injuries, but for Liverpool, very important players will be coming back. Thoughts on Nelson? Like I said initially कि यार Nelson played against Forest and चलो हमने काफी celebrate किया, करना भी चाहिए. Man scored after 1 year and उसके उसमें stat था, there was the gap between his first goal in this game and his previous goal was 1 year and something, and his next goal was around 2 minutes or 3 minutes or something. It was very interesting. खैर, प्रज्वल, ऐसा यूनाइटेड के साथ भी होता है। कैसा? कैसा होता है प्रज्वल भाई? सॉरी मैंने कॉन्टेक्स्ट मिस कर दिया। हाईएस्ट इज दाविद डहेया अगेंस्ट आर्सेनल। हाँ, द नंबर ऑफ सेव्स उस गेम, वो गेम तो यार सूर्य भाई मुझे याद है। वो आप कुछ भी शॉट मार रहे थे, दाविद डहेया अपने टांग से, अपने बम से, अपने सर से, हर चीज से बचा रहा था उस गेम में। वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। Beginning of season, Joshua again from Newcastle, I'm guessing. We had set a target for 7th to 9th and maybe a good cup run. We still lack the squad depth for top six. We're one injury away from being a mid-table team. No, but you have a transfer window in the middle, na? Yeah, So and I think ये जो
injury away from being mid-table. That's fair for every team. I think every team has a couple of very important players कि जो एक दो injuries हो जाएं खत्म हो जाएगा सब. Arsenal will be versus Newcastle will be a great game. हम उसको अच्छे से कवर करेंगे इस चैनल पे. Is Mohak भाई coming? मोहक भाई की तबीयत थोड़ी खराब थी तो he said कि if he's feeling better he'll come, but looks like नहीं आ रहे. Honestly, there's a lot of things GG in the back. Oh, I'm guessing good at the back. Let's appreciate Martinelli, water player. मेरे को तो लगता है लिवरपूल या सिटी में से उसको कोई ले जाएगा अगले 2-3 साल में. 100% the kind of attention he's getting. The good thing is though, every interview he's given, he's always said, I want to stay at Arsenal. I want to win something big at Arsenal. And he's looks like उसके जो contract में भी options है वो 2026 तक है अभी. तो हम If अगर Arsenal play well, क्यों छोड़ के जाएगा? Although I would love it. और yeah, yeah. क्लॉप तो ओपनली बोलता है भाई, मतलब वो क्लॉप जनरली डजंट नेम प्लेयर्स, बट Oh yeah, मार्टिनेली yeah. रिपीटेडली डज. हाँ हाँ, just every Liverpool Arsenal game कोई क्वेश्चन आएगा. आई रिमेम्बर द प्रीवियस गेम वी प्लेड अगेंस्ट यू गाइस जिसमें हम हारे थे एंड इंटरव्यू ने कुछ क्वेश्चन पूछा भी नहीं था एंड ही वाज लाइक बाय द वे गैब्रियल मार्टिनेली व्हाट अ प्लेयर. आई वाज लाइक अरे भाई किसी ने बोला भी नहीं, किसी ने प्रॉम्प्ट भी नहीं करा. हाँ. और क्लॉप यूजुअली प्लेयर्स को कभी ऐसे नेम नहीं करता है, या बट अनलेस कोई पूछे स्पेसिफिकली, बट वो 100%. करता है. बट आई थिंक ये एक ना ब्राजीलियंस का होता है कि अगर वो किसी इंग्लिश क्लब और में नहीं जाएंगे, इट्स ईदर रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना. एंड as much as I'd साउथ love, अमेरिकन प्लेयर्स. yeah. As much as I'd love for him to stay for Arsenal for 10 years, whatever, मेरे को लगता है कि यार eventually he's going to move on to a Madrid or a Barcelona or some place जहाँ पे उसको करना ही है. न्यूकासल में सब अल्मिरॉन ब्रूनो की बात कर रहे हैं पर बॉटमैन को कोई नहीं कंसिडर कर रहा है. यार मैंने बॉटमैन को देखा था. ही इज अ वेरी कंपोज्ड प्लेयर. मेरे को तो व्हेन दे साइंड हिम, एक और को भी ले रहे थे आई थिंक, पता नहीं. व्हेन दे साइंड स्वेन बॉटमैन आई न्यू कि ही इज गोइंग टू बी अ गुड साइनिंग, बट यू आर राइट, मे बी इज नॉट बीइंग प्रॉपर्ली रेटेड. बट जैसे कोर्तवा ने कहा यार, ये सारे फुटबॉल इज अ ग्लैमर एंड ग्लिट्स गेम. हमेशा गोल्स को ही देखा जाता है. समटाइम्स द डर्टी वर्क जो लोग करते हैं उनको अप्रिशिएट नहीं करता. नाउ इट्स टाइम टू बैक क्लॉप इन द मार्केट बाय ओनर्स, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी प्रीटी Prime मच. example, prime example is Gini Wijnaldum at Liverpool. Oh If yeah, you yeah, remember, that guy was yeah. abused left, right, and center by Liverpool fans. Mm. Shameful. You don't. A lot of people do not realize what Gini Wijnaldum did for Liverpool in terms of contributions. It's उसका it's game glamorous नहीं था. इट्स नॉट इवन ऑल्सो हिम यार. ओरिगी भी, चलो सब मीम करते थे ओरिगी को, बट वेन एवर ओरिगी यूज टू कम नो, एक सॉर्ट ऑफ होप होता था कि दिस मैन कैन मे बी टर्न अराउंड समथिंग. जो किया फिनिश्ड भी प्लेयर्स उसने. कहते हैं ना कि ओरिगी इज फिनिश्ड, वाइनाल्डम इज फिनिश्ड. आई अरे डोंट बट वांट टू से. ओरिगी, अरे मगर ओरिगी यूज्ड टू बी लाइक, वो बेंच से आके करता था. वाइनल्डम तो वीक इन वीक आउट यार, प्रीमियर लीग में, चैंपियंस या लीग में. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द बार्सिलोना परफॉर्मेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल यार. वो बहुत अच्छा प्लेयर था. एंड अगेन द थिंग इज, सी पीपल आर वेरी आउटपुट ओरिएंटेड. जैसे फॉर एग्जांपल योर थिंग अबाउट, अगेन मैं, आई एम नॉट हैविंग अ गो अगेंस्ट एनीवन यार, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल योर पॉइंट अबाउट टोमियासु, यार किया ना उसने आउटपुट, एंड दैट इज जस्ट वन एग्जांपल. या कुछ लोग करते हैं ऐसे जो दे प्ले द डर्टी गेम ऑफ द डर्टी साइड ऑफ द गेम व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ग्रंट वर्क बोलते हैं ना. exactly, हाँ. So it's very important. Mohammad Akhone says it's time to black Klopp in the market. That is true. Sorry, thoughts on Erling injury. इस गेम में चैंपियंस लीग में doesn't really matter. Everyone in the group has their position set. तो Erling खेले नहीं खेले फर्क नहीं पड़ता. They also have, यार उन्होंने लास्ट सीजन बिना किसी recognized striker के खेला था, so I don't think they'll be too worried. भाई, what do you think is more possible this season? Liverpool to finish in the top 3 in EPL or Napoli to reach UCL final? हिंदी भाई. अभी तो दोनों ही मुश्किल, मतलब नेपोली यूसीएल फाइनल. यार देखो, ऑनेस्टली आई एम नॉट, अभी तो मैं टॉप 3 टॉप 4 सोचता भी नहीं हूँ. मतलब इट इज टाइम फॉर अस टू जस्ट बी इन द मिक्स एंड देन होप द ओनर्स बैक क्लॉप इन द ट्रांसफर विंडो, सम विंटर वाले में. तो नेपोली चैंपियंस लीग फाइनल, ऑल्दो आई वुड लव टू सी दैट, बट बहुत टीम्स हैं यार अभी तो. एंड ये डिस्कशन अभी ऑन पेपर है यार. बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड, ऑफ कोर्स मैन सिटी.
There are a lot of teams here Mm. that are very, very strong. Liverpool are getting beaten on counter attacks and overturns due to a lot of second ball, especially from Hendo this season, which is opposite from what he was doing last season. And I think हमने इस पे बात कर ली कि काफी बड़ा डिक्लाइन हो गया है लिवरपूल का। तो मैं कहता हूँ कि लाइक पेप लिंडर्स ने जब से वो किताब लिखी है, लगता है सबने वो किताब पढ़ ली एंड एवरीवनस फिगरिंग आउट मेरे लिवरपूल। पास मेरे पास वो पेप लिंडर्स की ऑटोग्राफ, मतलब पेप लिंडर्स हिमसेल्फ, वो मैंने आई पुट इट अंडर अ लॉक एंड की, उसको मैं बाहर ही नहीं निकाल। लिवरपूल कांट अफोर्ड मार्टिनेली। ओनर्स को देख के लगता है, बट स्नेहित अच्छी बात आपने बोली है। I was thinking of a video. I'm thinking about this. It's called, how in Arsenal's process we will have to sell. We will have to sell to keep this process going. Owners cannot keep pumping up money. One of Saka, Emil Smith Rowe, Martinelli, इनमें से कोई निकलेगा. And I'll make a video on this. Liverpool fan, which club do you want to face in the UCL round of 16, Nidhi bhai? यार वांट टू फेस की तो बात नहीं है. Hmm. आई थिंक इट्स नॉट अबाउट वांटिंग टू फेस अ पर्टिकुलर टीम बिकॉज ऑल द टीम्स आर गुड. Hmm. आज के मैच में मतलब इट्स नॉट दीज थ्री, जस्ट दीज थ्री टीम्स बाय द वे. वी Hmm. कैन आल्सो गेट वी कैन आल्सो गेट स्पर्स वाले ग्रुप में अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया अगर, तो कि Marseille, उस ग्रुप मार्से Spurs. या फ्रैंकफर्ट, वो सारी चीजें भी हम देख सकते हैं. Hmm. और ये भी है क्लब ब्रूज इज आल्सो अनदर ऑप्शन दैट वी Yeah. कैन गेट. माय प्रेडिक्शन इज दैट वी विल गेट बायर्न म्यूनिक. माय प्रेडिक्शन इज, बट वो Batting प्रेडिक्शन you है, great इट्स games. जस्ट अ गट फील, इट्स जस्ट अ गट फील. Martinelli will be included in Brazilian front three. Very difficult because he prefers playing on the left. वहाँ पे नेमार और विनीशियस ऑलरेडी हैं, तो मुझे तो नहीं लगता. मुझे तो विनीशियस को भी डिस्प्लेस करना बहुत मुश्किल है भाई, अरे मतलब नेमार लेट्स ही बी है ना. ऑनेस्ट. हाँ, of course नहीं. I See, don't. and the thing with Brazil is so good, no, that talent might not be enough to Hmm. let you. Yeah. And they're like, and his time will come yet. He's what, 20? He's 20? क्या? 20 years old, right? He's Who, Martinelli is Martinelli? 20. Yeah. Yeah, yeah, he's 20. Let me So check. his हाँ, time will इस come. इस का ही होगा. Hmm. Martinelli is 21 years of age as of June. Will Arsenal win the Premier League? I do not think so, but let me dream. अभी जो moments खुशी के हैं वो खुशी में रहने दो. Like I said in the first video I made on this channel, कि a good season for Arsenal is at least 10 to 12 points more from last season, and we are on track of that. So अभी के लिए तो season's going really good. Thanks, Mayank bhai. We should do a video together, by the way, really soon. Why would Liverpool go? Why would Martinelli go to Liverpool? Because Klopp is a big flirt. We're probably also one party injury away from a debacle. Yeah. This is another thing about social media, no? कि अभी Liverpool is done, finished. अभी खत्म, कुछ नहीं होगा. नहीं 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 नहीं. लिवरपूल का पुल लोग बहुत अंडर प्ले करते हैं. एवरी क्लब विच हैज अ बिग हिस्ट्री. देखो, दो टाइप प्लेयर्स दो टाइप की जगह जाएंगे. यहाँ तो जहाँ बहुत पैसा है, अंधा पैसा, या फिर जहाँ पे बहुत हिस्ट्री है एंड यू कैन बिल्ड योर लेगेसी. एंड लिवरपूल की पुल, मैनचेस्टर यूनाइटेड की पुल, एंड ऑफ कोर्स एज द इयर्स गो बाय इवन मैन सिटी की पुल बहुत हार्ड टू रेजिस्ट होने वाली है, विच इज व्हाट बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड आर सर्वाइविंग ऑन. बार्सिलोना कितनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बाद, यू सी, players are willing to go into a difficult situation knowing where they might not get paid as much as they deserve to. वो पे कट्स लेने को तैयार हैं, अपनी पेमेंट्स फॉरगो करने को तैयार है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लेगेसी एंड द हिस्ट्री. कोई मॉड नहीं है क्या चैनल में इसको बैन करो? अच्छा, मैं कर, हाँ, वो जो मैं स्पैम थे मैंने कर दिया. मैं मॉड्स भी बना दूंगा, कोई बात नहीं. My question to Liverpool fan, if not Klopp, then who? That is true. But वो यार, We don't have to worry about it. Klopp yeah, is going nowhere. Klopp has too much. Question for both: which player do you think will have a better season, Rafinha or Antony in their first season in their new club? Haaland. If you're talking about completely new transfers, then of course Haaland. If you're talking about both, I think Antony will take time. I think Antony is going to be like Jesus. Just go, if you surround him with better players, he's going to play much better. And if United get Gakpo and all these guys, so of course.
Wijnaldum was a great player for our team जब न्यूकासल में था, of course, and it broke us बिल्कुल। when we left because we got relegated. हाँ. Who is the most underrated player of the English Premier League? भाई ऐसे बहुत हैं यार, बहुत है. मैं तो ऐसे बहुत हैं। जेम्स बहुत मिलनर इज वेरी अंडररेटेड। yeah. Trossard. अब now he's getting properly मतलब recognized. मैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जेम्स मिलनर ओवर द इयर्स, नॉट राइट Over नाउ। the अभी years, तो of course, जो हाँ मतलब हाँ क्रिएटिव प्लेयर है again वो। he's also one of those non-glamorous but gets the job done kind of player. अभी स्पेनिश टीम में ब्राजीलियन अभी स्पेनिश टीम में ब्राजीलियन प्लेयर लाने के लिए बजट नहीं है. मैड्रिड को चाहिए ना, और बारसा को एटलेटिको मार्टिनेली और एंटनी अफोर्ड नहीं कर सकती, ज्यादा पैसा चार्ज जाएगा. एंटनी तो अभी आया है यार। सर एंटनी तो अभी आया है यूनाइटेड में, हाँ अभी कहाँ मतलब जाएगा। एंटनी कहीं नहीं जाएगा, बट वही है, ही इज सेइंग कि साउथ अमेरिकन प्लेयर्स जो होते हैं, मे बी जस्ट ब्रिंगिंग ऑन दैट पॉइंट कि इवेंचुअली व्हेन एंटनी आल्सो माइट वांट टू गो टू अ मैड्रिड, आई कैन सी हिम एट अ मैड्रिड टू बी ऑनेस्ट. जो गोमेज इज नॉट द सेम प्लेयर आफ्टर इंजरी, वही निधि भाई ने बोला था. How you became an Arsenal fan and your favorite Arsenal player of all time? मैंने फीफा 2000 खरीदी थी डेमो, कहीं पे मेरे को डेमो मिला था और उसमें सिर्फ आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेएबल थे. मैंने आर्सेनल ली एंड मुझे दैट्स द ओनली प्रीमियर लीग टीम आई न्यू. देन आई स्टार्टेड वाचिंग. तब मैं आई थिंक 5-6 साल का ही था, तो मेरे को फुटबॉल उतना पता नहीं था. इवेंचुअली आई स्टार्टेड watching football. I started liking Arsenal. Players familiar लग रहे थे नाम से. um, and फिर रियल मैड्रिड से भी I became familiar. एक फेज था मेरा where I really like Barcelona, but then after that Fabregas debacle मैंने तो कभी नहीं देखा उनका वापस. फिर my favorite Arsenal player of all time, I think TT is a very obvious choice. Henry Bergkamp भी, but I would say it has to be Santi Cazorla. What a player, man! What a मतलब he was always smiling and everything. And I think बहुत कम लोगों की एक चॉइस होती है पर Mertesacker. वो बंदा कहाँ से आया, and he was a very important player for us also. He's a very recent player, but historically, of course, Bergkamp and Andre. स्पैम एंड निधि भाई, सच बोलूं तो रिसेंटली ट्रेंट का एटीट्यूड सही नहीं लगता. He seems quite egoistic, probably because of what he has already done and achieved at his age. अरे यार, ये तो आप कंजेक्चर कर रहे हो ना, मतलब ये आप, हाउ डू वी नो कि उसका वो एरोगेंट हो गया है और इगोइस्टिक हो गया, हमको क्या एटीट्यूड का इशू तो पता नहीं, वो तो वही जाने, लेकिन कॉन्फिडेंस का इशू जरूर लगता है। Mm, ही इज नॉट, मतलब वो बहुत बार ऐसे सिचुएशन में जब प्लेयर्स रन पास्ट हिम ना, एंड mm, फ्रैंकली दैट यूज्ड टू हैपन, बट व्हाट saved and what was system में जो चीज अच्छी होती है ना, Henderson used to cover those positions and mm, Trent used to gain that confidence from there. Now because Henderson himself is in a such rotten form, mm. वो नहीं कर पा रहा है और उससे वजह से ट्रेंट का कॉन्फिडेंस अफेक्ट हो रहा है। Yeah. इगोइस्टिक पता नहीं यार, आई हाउ डू आई नो। चलो, there are a lot of comments. I've gone through all of them. ऐसे तो कोई questions नहीं थे. Is KDB the best midfielder? Most likely यस, yes, unless यस। you're also talking about Modric. There are some questions about, Matt Turner की तरह FIFA fan बने, of course. Arsenal, my favorite Arsenal player of all time, Ian Wright, very good pick, amazing player. Son is also underrated. I do not agree. I think Son Not is no, not properly anymore. rated. Son is Not anymore. properly rated. No, Son is Khair, not underrated. yeah, it's been 1 hour. We'll end this with one question to Nidhi Bhai because I think he also has his life soon. Yep. Um, Nidhi Bhai, there was this question about Liverpool को midfielder लेना चाहिए और एक दो और भी हैं. हाँ. What kind of midfielder? I mean, आप कह रहे हो कि Wijnaldum के mold का चाहिए, but who is your dream signing for Liverpool if you had to sign a midfielder right now? ड्रीम साइनिंग की रियलिस्टिक। चलो दोनों ही बता दो. See, dream. I think Jude Bellingham, not Hmm. because of the hype, but if you look at his play, no, he fits perfectly. But that's a dream signing. I think Can realistically, Bellingham बोला and जाए तो can Bellingham and Thiago play together? yes, 100%. Okay. Bellingham right side में he is absolutely brilliant. He can link up play. He comes back to defense. जो क्लॉप करता है ना, Hmm. वो सब कुछ है बेलिंगम में. But Hmm. again, I think we have been priced out of Bellingham. Yeah. I 150 think million.
nahi, I think you can make that one splash, but it will heavily depend on if you get Champions League. I think. हाँ, एग्जैक्टली, Yeah. एग्जैक्टली। तो uh, again, dream signings. There are a lot of players. I personally feel that, see, again, Bruno Guimaraes, but again, Newcastle ke players, I don't think anybody can target right now. Not right now. They are part of a project, and look, they have the money to retain whoever they want, unless कोई player बोले कि मेरे को रियल मैड्रिड ही जाना है, अब जैसे ब्रूनो गुमारेश लड़ जाए कि नहीं, आई वांट टू गो टू रियल मैड्रिड, Hmm. so maybe, but otherwise, it's going to be very difficult for any club, not just Liverpool, Yeah. any club to sign Newcastle players. Um, but talking about realistic signings, honestly, see, I like the look of Casiedo. I think Hmm. he's a brilliant player. Hmm. Again, one player that I like a lot is जो मैं वो बोल रहा था ना, चांस क्रिएटर, प्ले मेकर, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, आई थिंक मैडिसन वुड बी अ ग्रेट प्लेयर फॉर Hmm. लिवरपूल। ही कैन कम इन। लोग इसकी बात करते हैं टिलेमेंस की, बट Hmm. टिलेमेंस इज नॉट अ रनर एंड ही इज नॉट अ Yeah. फिट फॉर, Yeah. he's not a fit. So I think that is another, maybe a realistic signing depending on how Leicester end their season, because Hmm. if Leicester are not strong, then he will perhaps want to leave. Enzo Lefi is a player in French league that I really like. These are Hmm. all players that I think we can consider. Hmm. But again, depends. एक एक हमको एक सॉलिड प्लेयर चाहिए इन द मिडल ऑफ द पार्क, वो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है I'm ऑन द राइट surprised. साइड। आप लोग, I think over the summer you were linked with आई एम Matheus Nunes also, right? आई एम अमेज्ड, सी मैथेस नूनेस सब लोग बोलते हैं यार, आई एम अमेज्ड वी डिड नॉट गो फॉर लुकास पकेटा। आई एम Hmm. अमेज्ड Yeah. नोबडी वेंट फॉर लुकास पकेटा Yeah. यार। Hmm. आई Arsenal were जस्ट also linked with him. Huh? एम एंड आई एम टेलिंग यू, मैंने ये पहले भी बोला है, Hmm. लुकास पकेटा इज गोइंग टू बी द सुपरस्टार इन दिस वर्ल्ड कप। Hmm. And the fact that West Ham got him so cheap, I think they got him for what, like 36-40 million or Hmm. something like that. I think so. It is Yeah. amazing. Yeah. Yeah, it is amazing. वो Paqueta would वेस्ट have been हैम, a brilliant हाँ, buy. वेस्ट हैम ऐसे Matt, पुल्स कर लेता है, पायट को भी किया था, पकेटा हाँ, इस पर ले लिया, हाँ। Matt O'Reilly है Celtic वाला. There are Hmm. a lot of players that we can Yeah. consider. Yeah. Um, Realistic target for this winter. Is this winter window just about getting a body in midfield, or is it No, about getting the no, right player? no, Is no. there a right player now? We got a body in, and like वो मुन्ना भाई वाला body लेके आ गए हम लोग, आर्थर। ठीक है, तो नहीं यार, वी हैव टू गेट अ प्लेयर दैट फिट्स, दैट कैन कम एंड परफॉर्म। तो Hmm. या बिल्कुल, आई Yeah. थिंक डेक्लन राइस यार, ऑनेस्टली सभी, डेक्लन राइस ना पोजीशन साइज, पोजीशन बेस्ड टीम्स में वो नहीं खेलेगा अच्छा। Hmm. डेक्लन राइस को आप डाल दो चेल्सी में, आर्सेनल में डाल दो, लिवरपूल में डाल दो, नहीं वो नहीं चलेगा। हिज स्टाइल डज नॉट, हिज स्टाइल डज नॉट सूट A अ possession पोजीशन heavy बेस्ड। team. But honestly, अगर आर्सेनल के लिए साइन कर ले तो मैं I would be happy. But more likely he is definitely most likely is going to go to Chelsea. उसको मतलब उसको देख के लगता है he's a Chelsea guy. He's played for Chelsea also in his youth. मेरे को तो लगता है he's going to go back. Preetham says ग्रेट bring back प्लेयर, Gerrard. ग्रेट प्लेयर, हाँ, नो of डाउट। course. It's all about the fit, यार. Sometimes जैसे Yeah. Pepe also. Pepe was a great player in France लीगा में जब खेल रहा था नहीं. Still last 6 games में he's won. He scored 4 goals. 2 man of the match जीत गया है. But for Arsenal वो नहीं था यार मतलब. So okay. भैया आप टैग लगाना सीख लो टाइटल में. सॉरी भाई मैं कर लूंगा बिल्कुल ठीक. Conrad Limer, हाँ Conrad Limer is also good there, but I don't think The मुझे. news is that he's the news that is that he is virtually in for Bayern Munich. Yeah, no, वही होगा. तो वो जर्मन प्लेयर्स को अगर बायर्न म्यूनिख बुलाती है तो फिर बड़ा Hmm. मुश्किल है यार। Kivicha Kvaratskhelia, I think ये तो मैन सिटी जाएगा eventually. He is going to swap one sky blue shirt for the other one. ऑस्ट्रियन जर्मन प्लेयर्स को अगर बायर्न म्यूनिख बुलाती है तो फिर Oh हाँ, of course. वो तो है ही गए. हाँ, जो आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए कह रहे थे. हाँ, खैर, guys, it's been 1 hour 10 minutes. I will let Nidhi bhai go. He's been very kind to come on this live. नो वरीज यार। 70 people watching. Thank you so much for watching. Thank you so much for सब्सक्राइब coming. सब्सक्राइब।
सब्सक्राइब ऑफ कोर्स कर दो, अगर स्ट्रीम को लाइक करना है कर दो, एंड पुट इन योर कमेंट्स अबाउट दिस स्ट्रीम का ओरिजिनल इंटेंशन था रिव्यूइंग अक्टूबर. सो हाउ आपकी टीम ने अक्टूबर में कैसे परफॉर्म करा, हाउ मेनी स्टार्स आउट ऑफ 5 विल यू गिव देम? फॉर मी, फॉर आर्सेनल, लाइक आई सेड, 8 wins, 1 draw, 1 loss, and that loss was very inconsequential. So for Arsenal, I think that October was at least a 4.5, maybe even 5 stars. um Thanks, Lucky Reds, W Stream. Great show, guys. Of course, great audience as well. You guys, thank you so much for coming. Sambi Lokonga पे एक वीडियो आने वाली है, डोंट वरी. पुट इट इन द कमेंट्स, अभी स्ट्रीम पे नहीं, स्ट्रीम के बाद कमेंट्स पे डाल देना, एंगेजमेंट बढ़ता है, अच्छा लगता है. एंड फ्रॉम नाउ ऑन, ऑफ कोर्स, आई प्रॉमिस, वीडियोस रेगुलर होंगी, स्टार्टिंग विद the review, not the preview of this Europa League game, because preview में कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं. It's very straightforward. Maybe I'll go live just before the game to discuss it, but एक review video आएगा. Thank you everyone for coming. Thank you Lucky Reds, Abhijit, Shaswat, Adish, Shaunak, Mayank, everyone who came here. And thank you so much. Like I always say, come on you Gunners. And as Nidhi Bhai says, Up the Reds. up the Reds. Thank you so much, guys. Bye bye.